महाकुंभ नगरी की महिमा निराली है। महाकुंभ नगर का जर्रा जर्रा इस वक्त बैकुंठ का साक्षी बन रहा है। हर हर महादेव के जय घोष से, जय श्री राम के जय घोष से समूची महाकुंभ नगरी गूंज रही है। यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने कुछ वक्त बिता लिया तो आप यही रहना चाहेंगे। इतनी खूबसूरत ये नगरी इस वक्त हो गई है। नागा साधु, चहुओर संत महात्माओं का डेरा और पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है महाकुंभ नगरी। हम इस वक्त दिगंबर साधु शिवानंद गिरी जी महाराज से के पास मौजूद हैं। उनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे नागा साधुओं की दुनिया का रहस्य क्या है और परम आनंद की प्राप्ति महाराज जी को कैसे हुई और इतना खुश वो कैसे रहते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप को देख करके बेहद ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हूं मैं और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। महाकुंभ नगरी को लेकर क्या कहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति कैसे अपने अंदर आत्मसात करे, उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो परमानंद की प्राप्ति करे, कैसे वो आनंद की प्राप्ति करे, आप क्या कहेंगे? सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नियम का फॉलो करना पड़ेगी। सबसे कठिन बात है कि नियम को फॉलो करना। और हम सब ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुजी के सामने जाते हैं, गुरुजी हमारे को सदुपदेश देते हैं। सदुपदेश की पीछे पीछे जाना कठिन तपस्या है और नागा साधु बनने में और कठिन तपस्या है। जंगलों में बैठना, पहाड़ों में बैठना, बर्फ में बैठना, ठंडी में बैठना, वैसे बैठ के ग्रंथों का पारायण करना, फिर योगासन मेडिटेशन भी करना। और ऐसा करते करते कम से कम 11-12 साल हो जाएगा तो गुरु निर्णय करेगा यह नागा बनने के लिए योग्य या नहीं योग्य। महाराज जी, आप बता रहे थे कि आपका जन्म त्रिवेंद्रम केरला में हुआ। हाँ जी। और आपने डिप्लोमा किया। हाँ जी। आप डिप्लोमा इंजीनियर डिप्लोमा तक पढ़ाई किया और आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। You speak so well English, and especially I speak English and I know a little bit of Spanish also. Okay, you speak English as well as Spanish, and you were saying that you know more than 7 foreign languages as well. Yeah. More than 7 languages. We will discuss it after today. It's about the time to our. I like to go to my mess because I am sitting here about 12 o'clock noon. Just I finished my tapasya. So tell me about yourself in English. That from where you born and when did you you became Naga Sadhu, and how much pleasure do you feel after becoming Naga Sadhu, and what do you want to say to the youth of today, and what's your mantra of success and what's your mantra of positive energy? After becoming a member of Niranjani Akhada Haridwar, I had done the Vedanta course. Since last 12 years, I am practicing my yoga and meditation all day, every day, all morning. If I can't get any piece of biscuit, I can never avoid my yoga practicing. And after becoming a Naga Sadhu, I visited Kedar, Bedri, Tunganath, Kalpeshwar, Kartik Swami Mandir. बर्फ इलाकों में हम दर्शन किया। उधर वेदांत में कहते हैं कि ऐसा भिन्न भिन्न जगह में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, ये साधु है ना बराबर स्वस्थ है, समझते हैं। इसीलिए साधु को क्या गर्मी, साधु को क्या बारिश है, साधु को क्या ठंडी। Madam ji, what's your routine daily as a Naga Sadhu? What do you do today and every day, and what's the routine of it from morning till night? Early morning I will take my bath. Okay. And wearing ash on my whole physical body. And after that I am practicing my yoga and meditation about 1.5 hours. Okay. After that I will take my nasta. Breakfast. Then after that I will read some books detailing the Vedanta, otherwise any Upanishad. After that I will get slept up to 1 o'clock. You do Tantra sadhana as well, or such kind of sadhana, meditation? You said meditation, and I am following the mantra sadhana. Tantra sadhana is doing by the Brahmins. Okay. Especially we Naga sadhus practicing the mantra sadhana. Okay. Mantra sadhana. Mantra sadhana. One question also arises. I am doing my mantra sadhana from the basis of Atharva Veda. Okay. Atharva Veda. Okay. You read Vedas, all Vedas, Rigveda, Atharvaveda. I am a Vedanta scholar also. You are a Vedanta scholar. You read all 4 Vedas. I am a Vedanta scholar also. Okay. But I am following the Atharva Veda.
Okay. It's very helpful for me for practicing my mantric sadhanas. Why it is so? For mantrik sadhana, it is very important. Atharva Ved is good, and it feels you good inside, from inside. I am feeling the maximum pressure inside my physical body, mind and soul especially. Okay. Maharaji, I met many of the sadhus, basically Naga sadhus, and they speak of Hindi and many other languages. But for the first time, I think I am talking to a Naga sadhu who is speaking so fluent English. Bendiciones. Gracias. Yes. Gracias. I met many of the Naga sadhus. Today also I met many of the Naga sadhus, but in such a fluent English, I never met Naga sadhu in this Mahakumbh Nagar. Gracias. And sir, what do you want to, that's why I am reciting it, sir, but Maharaji, what do you want to say that such kind of, from which age you became Naga sadhu, and since how many years you are a Naga sadhu? It's my 12th year. 12 years. Now I am at the age of 52. Okay. Why at the age of 52? At the age of 40, I became a sadhu at Niranjani Akhada, Haridwar. Okay. Now I am 52. Maharaji, what do you want to say about this ashes? Why this bhabut and ashes? What is the thought behind this? You see, man, it's ash. Okay. It's your final position. Okay. The final position. It's the everybody's final position. This camera will one day become this ash. One day you will become this ash. Your mic will also one day will become this ash. We are wearing the ash because we are realizing we are this ash. There is no difference between there is no between my physical body and this ash. Okay. We are realizing that no difference between our physical body and this ash. Maharaji, For demonstrating and understanding the whole people, understanding the community, we are wearing this ash. Shivji also wearing this ash. Shivji also wearing this ash, and there is power in this ash. Shivji knows that everybody will become, one day everybody will become this ash. Okay. He realizing that. Okay. For advising the whole world, he is self-wearing the ash and showing the world, everybody will become, one day everybody will become ash. Maharaji, you don't feel cold? No. Nothing. वेदांत में एक शब्द है तितिक्षा. Okay. तितिक्षा का मतलब है ठंडी में बैठना, गर्मी में बैठना, बारिश में बैठना है तो कोई हलचल नहीं होती है. Lots of Rudraksh malas are also there, and it's very difficult to wear all this, or it's an enjoyable moment. By the blessing from the God, I am wearing 11,008 Rudrakshas. Okay. 11,008 Rudraksha you are wearing. Rudrakshas. Okay. And you feel so good. It's so Rudraksha also gives us positive energy and feelings. Rudraksha also carries positive energy, paramagnetic energy. There is no three types of energy: paramagnetic energy, paramagnetic energy. By wearing this Rudraksha, but our energy inside the physical body will make a balancing mode. You understand? Yeah, I understand. It's And out of that, the Rudraksha also carries current. Maharaji, you were talking about Paramanand and Anand. What is the mantra of Paramanand and Anand? How can a common man be so happy? Because I think people don't live in today. They live in either past or they live in either future. What do you think that one should live in the present, at the present moment? Veda says first state of position. Veda says first state of position. Okay. Jagrat, Swapna, Sushupti and Turiya. By wearing this kind of Rudrakshas, we are sitting in Turiya mode. Maharaji, and what do you want to say about Kundalini Jagrati? How can a person, awaken his Kundalini? Nobody can awake the Kundalini because this kind of Kali Yuga. Because we are all eating the tamasic food. Okay. We are breathing the tamasic air. And we are connected with all tamasic efforts and all tamasic guys. Okay. Then how we can awake the Kundalini? Never. अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनमय कोशा, ऐसा है कोशों का सीढ़ी आते हैं ना. अन्नमय कोश भी गंदा हो गया ये विष खा के. Maharaji, what do you say about this tilak? The tilak culture in Bharat. सिर्फ करते हैं ना, ये एनर्जी पॉइंट होती है. एनर्जी पॉइंट में और शादी करने के बाद बहू यानी इधर वो भी एक एनर्जी पॉइंट है. एनर्जी पॉइंट. And that's why it is between eyebrows. चंदन का तिलक स्वरूप करते हैं ना, तन को ठंड करते हैं.
Okay. हाँ. That's why we have tilak here itself in the between two eyebrows because we feel energy here, and that's why only India, in only Bharat, I think, women's have been here. No. Especially nowadays in Trinidad Tobago, African country, Yes. they're also following the Sanatana Dharma. More than 5 sadhus arrived from Trinidad Tobago to participate in this Mahakund. Maharaj ji, one last question. What do you want to say to the youth of this country and youth of this whole world, that or all of the world, that live in today, live in happiness and be yourself? The whole world must be live in a good position. And Veda is also says that. संखचद्वम संवदद्वम संवो मनासी जाना था सबकी सब जाना सबकी हिसाब में रखना सबकी हिसाब में जिंदगी जीना यह संखचद्वम संवदद्वम संवो मनासी जाना था और एक और शब्द है कि लोग समस्त सुखिनो भवन्तु समस्त लोगों ये केवल भूमि नहीं है पृथ्वी नहीं है विष्णु लोग यम लोग वैसा समस्त लोगों को सुख और शांति प्रदान कर ले ऐसा है हमारा हम सनातन धर्मियों का प्रार्थना हर हर महादेव। बेंडिसियोनस। आपने देखा दिगंबर शिवानंद जी महाराज जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो साधना करते हैं, तप साधना करते हैं और कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि वेद को पढ़ते हैं, वो अथर्व वेद के वो मुरीद हैं और अथर्व वेद के वो ज्ञान हासिल कर रहे हैं और अथर्ववेद, यजुर्वेद और चारों वेद उन्होंने पढ़ रखे हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी में दिगंबर शिवानंद जी महाराज बोलते हैं। ऐसे नागा साधु आपने शायद ही अभी तक कहीं देखे होंगे जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हों। वाकई में नागा साधुओं का रहस्य निराला है, नागा साधुओं की दुनिया निराली है और महाकुंभ नगरी तो बैकुंठ नगरी बन गई है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।